जय मां दुर्गा। आप दिव्य दुर्गा भवानी कवच का श्रवण करने जा रहे हैं। यह शक्तिशाली कवच सुरक्षा, धन लाभ, विजय प्राप्ति और मनचाही वस्तु की प्राप्ति में सहायक है। साथ ही यह बुरे कर्मों से मुक्ति दिलाने वाला है। हर प्रकार की नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करने वाला यह दिव्य कवच केवल श्रवण मात्र से मां की कृपा दिलाता है। ये जादू टोना, टोटका, भूत प्रेत, तंत्र मंत्र और शत्रुओं से सुरक्षा प्रदान करता है। कोई भी बुरी शक्ति या व्यक्ति आपका अहित नहीं कर सकता। सभी रोग बाधाएं समाप्त होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। अब पूर्ण भक्ति के साथ इस दिव्य कवच को पूर्ण 5 बार श्रवण करें और मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करें। अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः चामुण्डा देवता अगन्याशोक्त मातरो बीजं दिग्बन्ध देवतास्तत्त्वं श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठं गत्तेन जपे विनियोगः। ॐ नमः चण्डिकायै। मार्कण्डेय उवाच यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरन्नृणाम् यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रि च महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतो रणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्ताः शरणं गताः न तेषां जायते किञ्चित् शुभं रणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि यैस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां हि प्रजायते। ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान्न संशयः। प्रेतसंस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्री गजसमारूढा वैष्णवी गरुणासना माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंस समारूढ़ा शरभाभरणभूषिता नानाभरण शोभाढ्या नानारत्नोपशोभिता दृश्यन्ते रथमारूढ़ा देव्यः क्रोधशमाकुलाः शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं चामुशलायुधं केटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च हुन्तायुधं त्रिशूलं च सार्गमायुधमुत्तमं दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां भयाय च धारयन्त्यायुधानित्थं देवानां च हिताय वै महाबले महोत्साहे महाभय विनाशनी त्राहि मां देवी दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धनी प्राच्यां रक्षतु मामैन्द्री अग्नेयामग्निदेवता दक्षिणे बतु वाराही नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षे वायव्यां मृगवाहिनी उदीच्यां रक्षे कौबेरी ईशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षे हस्ताद्वैष्णवी तथा एवं 10 दिशो रक्षे चामुण्डा सबवाहना जया मे चाग्रतास्तातु विजयास्तातु पृष्ठतः अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखा मे दुत्तिनी रक्षे उमा मूर्ध्नि व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रुवौ रक्षेद् यशस्वनी त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके शङ्खनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासनी कपोलौ कालिका रक्षे कर्णमूले तु शाङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे चामृतकला
जीवायाञ्च सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारी कण्ठमध्ये तु चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिम्बुकं रक्षे वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा बहि कण्ठे नलिकां नलकूबरी खड्गधारिण्युभौ स्कन्धो बाहु मे वज्रधारणी हस्तयोर्दण्डनी रक्षेत् अम्बिका चाङ्गुलिस्तथा नखाञ्चूलेश्वरी रक्षेत् कुच्छौ रक्षे नलेश्वरी स्तनौ रक्षेन्महालक्ष्मी मनाशोकविनाशिनी हृदयं ललिता देवी उदरं शूलधारणी नाभौ च कामनी रक्षे गुह्यं गुह्येश्वरी तथा कट्यां भगवती रक्षे जानुनी विन्ध्यवासिनी जङ्घे महाबला रक्षे सर्वकामप्रदायिनी उल्पयोर्नारसिंही च पादौ च निततेजसी पादाङ्गुलीषु श्रीरक्षे पादाधस्थलवासिनी नखान्दंष्ट्राकराली च केशाञ्चैवोर्ध्वकेशनी रोमकूपेषु कौबेरी त्वचं वागीश्वरी तथा रक्तमज्जावसामासां मेदांसि पार्वती अन्त्राणि कालरात्रिश्च नित्यं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वाला अभेद्या सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षे छायां चत्तेश्वरी तथा अहङ्कारं मनोबुद्धिं रक्षवे धर्मधारणी प्राणापानौ तथा व्यानमुदानं च समानकं वज्रहस्ता च मे रक्षे प्राणं कल्याणशोभना रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगनी सत्यं रजस्तमश्चैव रक्षेन्नारायणी सदा आयुरक्षतु वाराही धर्मं रक्षतु वैष्णवी यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रणी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षे पशून् मे रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्षेन्महालक्ष्मी भार्यां रक्षतु भैरवी पन्थानं सुपथा रक्षे मार्गं क्षेमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मी विजया सर्वथा स्थिता रक्षाहीनं तु यतस्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशनी पदमेकं न गच्छेत्तु यदि चेच्छुभमात्मनः कवचेनाव्रतो नित्यं यत्र यत्रार्थी गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सार्वकामिकः यं यं कामयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्यः सङ्ग्रामेष्वपराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्यः कवचेनाव्रतः पुमान् इदं तु देव्याः कवचं देवानामपि दुर्लभं यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्ये पराजितः जीवेत् वर्षशतं साग्रम् अपमृत्यु विवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे भूता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं वापि कृत्रिमं चापि यद्विषम् अविचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचराः खेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिकाः सहजाः कुलजा माला शाकनी डाकनी तथा अन्तरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्च महाबलाः ग्रहपूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेतालाः कूष्माण्डाः भैरवादयाः नश्यन्ति दर्शनात् तस्य कवचेरधि संस्थिते मानो नतिर्भवेत्राज्ञ तेजो वृद्धिकरं परं यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपेत् सप्तशतीं चण्डी कृत्वा तु कवचं पुरा यावद्भूमण्डलं धत्ते शैलवनकाननं तावत्तिष्ठति मेदिन्या सन्ततिः पुत्रपौत्रकी देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरैरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते इति देव्याः कवचं सम्पूर्णं श्रीजगदम्बार्पणमस्तु।
अस्य श्रीचण्डी कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः चामुण्डा देवता अगन्याशोक्तमातरो बीजम् दिग्बन्ध देवतास्तत्त्वम् श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठं गत्तेन जपे विनियोगः। ॐ नमः चण्डिकायै। मार्कण्डेय उवाच यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरन्नृणाम् यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रि च महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतो रणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्ताः शरणं गताः न तेषां जायते किञ्चित् शुभं रणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि यैस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां हि प्रजायते। ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान्न संशयः। प्रेतसंस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्री गजसमारूढा वैष्णवी गरुणासना माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मीः पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंससमारूढा शरभाभरणभूषिता नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नोपशोभिताः दृश्यन्ते रथमारूढा देव्यः क्रोधशमाकुलाः शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं चामुशलायुधं केटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च सार्गमायुधमुत्तमं दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां भयाय च धारयन्त्यायुधानित्थं देवानां च हिताय वै महाबले महोत्साहे महाभय विनाशनी त्राहि मां देवी दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धनी प्राच्यां रक्षतु मामैन्द्री अग्नेयामग्निदेवता दक्षिणे बतु वाराहि नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षे वायव्यां मृगवाहिनी उदीच्यां रक्ष कौबेरी ऐशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षे हस्ताद्वैष्णवी तथा एवं दश दिशो रक्षे चामुण्डा सबवाहना जया मे चाग्रतास्तातु विजयास्तातु पृष्ठतः अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखा मे दुत्तिनी रक्षे उमा मूर्ध्नि व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रुवौ रक्षेद् यशस्वनी त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके शङ्खनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासनी कपोलौ कालिका रक्षे कर्णमूले तु शाङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे चामृतकला जीवायां च सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारी कण्ठमध्ये तु चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिम्बुकं रक्षे वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा वही कण्ठे नलिकां नलकूबरी खड्गधारिण्युभौ स्कन्धो बाहो मे वज्रधारिणी हस्तयोर्दण्डनी रक्षेद् अम्बिका चाङ्गुलिस्तथा
नखाञ्चूलेश्वरी रक्षेत् कुच्छौ रक्षे नलेश्वरी स्तनौ रक्षेन्महालक्ष्मी मनाशोकविनाशिनी हृदयं ललिता देवी उदरं शूलधारिणी नाभौ च कामनी रक्षे गुह्यं गुह्येश्वरी तथा कट्यां भगवती रक्षे जानुनी विन्ध्यवासिनी जङ्घे महाबला रक्षे सर्वकामप्रदायिनी उल्पयोर्नारसिंही च पादौ च निततेजसी पादाङ्गुलीषु श्रीरक्षे पादाधस्थलवासिनी नखान्दंष्ट्राकराली च केशाञ्चैवोर्ध्वकेशनी रोमकूपेषु कौबेरी त्वचम्बागीश्वरी तथा रक्तमज्जावसामासा यस्थिमेदांसि पार्वती अन्त्राणि कालरात्रिश्च नित्यं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वाला अभेद्या सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षे छायां चत्तेश्वरी तथा अहङ्कारं मनोबुद्धिं रक्ष मे धर्मधारिणी प्राणापानौ तथा व्यानमुदानं च समानकं वज्रहस्ता च मे रक्षे प्राणं कल्याणशोभना रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगनी सत्यं रजस्तमश्चैव रक्षेन्नारायणी सदा आयुरक्षतु वाराहि धर्मं रक्षतु वैष्णवी यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रणी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षे पशून् मे रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्षेन्महालक्ष्मी भार्यां रक्षतु भैरवी पन्थानं सुपथा रक्षे मार्गं क्षेमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मी विजया सर्वथा स्थिता रक्षाहीनं तु यतस्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशनी पदमेकं न गच्छेत्तु यदि चेच्छुभमात्मनः कवचेनाव्रतो नित्यं यत्र यत्रार्थी गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सार्वकामिकः यं यं कामयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्यः सङ्ग्रामेष्वपराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्यः कवचेनाव्रतः पुमान् इदं तु देव्याः कवचं देवानामपि दुर्लभं यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्ये पराजितः जीवेत् वर्षशतं साग्रम् अपमृत्यु विवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे भूता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं वापि कृत्रिमं चापि यद्विषम् अविचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचराः खेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिकाः सहजाः कुलजा माला शाकनी डाकनी तथा अन्तरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्च महाबलाः ग्रहपूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेतालाः कूष्माण्डाः भैरवादयाः नश्यन्ति दर्शनात् तस्य कवचे हृदि संस्थिते मानो नतिर्भवेत्राज्ञः तेजो वृद्धिकरं परं यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपेत् सप्तशतीं चण्डी कृत्वा तु कवचं पुरा यावद्भूमण्डलं धत्ते शैलवनकाननं तावत्तिष्ठति मेदिन्या सन्ततिः पुत्रपौत्रकी देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरैरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते इति देव्याः कवचं सम्पूर्णं श्रीजगदम्बार्पणमस्तु। अस्य श्रीचण्डी कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः चामुण्डा देवता अगन्याशोक्तमातरो बीजं दिग्बन्ध देवतास्तत्त्वं श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठं गत्तेन जपे विनियोगः। ॐ नमः चण्डिकायै। मार्कण्डेय उवाच यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरन्नृणां यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामहः। ब्रह्मोवाच
उवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रि च महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतो रणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्ताः शरणं गताः न तेषां जायते किञ्चित् शुभं रणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि यैस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां हि प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसेतान्न संशयः प्रेतसंस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्री गजसमारूढा वैष्णवी गरुणासना माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंस समारूढ़ा शरभाभरणभूषिता नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नोपशोभिता दृश्यन्ते रथमारूढ़ा देव्यः क्रोधशमाकुलाः शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं चामुशलायुधं केटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च सार्गमायुधमुत्तमं दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां भयाय च धारयन्त्यायुधानित्थं देवानां च हिताय वै महाबले महोत्साहे महाभय विनाशनी त्राहि मां देवी दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धनी प्राच्यां रक्षतु मामैन्द्री अग्नेयामग्निदेवता दक्षिणे बतु वाराहि नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षे वायव्यां रगवाहिनी उदीच्यां रक्ष कौबेरी ऐशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षे हस्ताद्वैष्णवी तथा एवं दश दिशो रक्षे चामुण्डा सबवाहना जया मे चाग्रतास्तातु विजयास्तातु पृष्ठतः अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे चा पराजिता शिखा मे दोत्तिनी रक्षे उमा मूर्ध्नि व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रुवौ रक्षेद् यशस्वनी त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके शङ्खनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासनी कपोलौ कालिका रक्षे कर्णमूले तु शाङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे चामृतकला जीवायां च सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारी कण्ठमध्ये तु चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिम्बुकं रक्षे वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा बहि कण्ठे नलिकां नलकूबरी खड्गधारिण्युभौ स्कन्धो बाहो मे वज्रधारिणी हस्तयोर्दण्डनी रक्षेत् अम्बिका चाङ्गुलिस्तथा नखाञ्चूलेश्वरी रक्षेत् कुच्छौ रक्षे नलेश्वरी स्तनौ रक्षेन्महालक्ष्मी मनाशोकविनाशिनी हृदयं ललिता देवी उदरं शूलधारिणी नाभौ च कामनी रक्षे गुह्यं गुह्येश्वरी तथा कट्यां भगवती रक्षे जानुनी विन्ध्यवासिनी जङ्घे महाबला रक्षे सर्वकामप्रदायिनी उल्पयोर्नारसिंही च पादौ च निततेजसी पादाङ्गुलीषु श्रीरक्षे पादाधस्थलवासिनी नखान्दंष्ट्राकराली च केशाञ्चैवोर्ध्वकेशनी रोमकूपेषु कौबेरी वचम्बागीश्वरी तथा रक्तमज्जावसामासान्यस्थिमेदांसि पार्वती अन्त्राणि कालरात्रिश्च नित्यं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वाला अभेद्या सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षे छायां
सप्तेश्वरी तथा अहंकारं मनोबुद्धिं रक्ष वे धर्मधारिणी प्राणापानौ तथा व्यान मुदानं च समानकं वज्रहस्ता च मे रक्षे प्राणं कल्याणशोभना रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगनी सत्यं रजस्तमश्चैव रक्षेन्नारायणी सदा आयुरक्षतु वाराहि धर्मं रक्षतु वैष्णवी यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रणी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षे पशून् मे रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्षेन्महालक्ष्मी भार्यां रक्षतु भैरवी पन्थानं सुपथा रक्षे मार्गं क्षेमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मी विजया सर्वथा स्थिता रक्षाहीनं तु यतस्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशनी पदमेकं न गच्छेत्तु यदि चेच्छुभमात्मनः कवचेनाव्रतो नित्यं यत्र यत्रार्थी गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सार्वकामिकः यं यं कामयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्यः सङ्ग्रामेष्वपराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्यः कवचेनाव्रतः पुमान् इदं तु देव्याः कवचं देवानामपि दुर्लभं यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्ये पराजितः जीवेद्वर्षशतं साग्रम् अपमृत्यु विवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे भूता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं वापि कृत्रिमं चापि यद्विषम् अविचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचराः खेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिकाः सहजाः कुलजा माला शाकनी डाकनी तथा अन्तरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्च महाबलाः ग्रहपूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेतालाः कूष्माण्डाः भैरवादयाः नश्यन्ति दर्शनात् तस्य कवचेहृदि संस्थिते मानो नतिर्भवेत्राज्ञः तेजो वृद्धिकरं परं यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपेत् सप्तशतीं चण्डी कृत्वा तु कवचं पुरा यावद्भूमण्डलं धत्ते शैलवनकाननं तावत्तिष्ठति मेदिन्या सन्ततिः पुत्रपौत्रकी देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरैरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते इति देव्याः कवचं सम्पूर्णं श्रीजगदम्बार्पणमस्तु। अस्य श्रीचण्डी कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः चामुण्डा देवता अगन्याशोक्तमातरो बीजं दिग्बन्धदेवतास्तत्त्वं श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठं गत्तेन जपे विनियोगः। ॐ नमः चण्डिकायै। मार्कण्डेय उवाच यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरन्नृणां यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामहः। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रि च महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतो रणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्ताः शरणं गताः न तेषां जायते किञ्चित् शुभं रणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःख
दुःखभयं नहि यैस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां हि प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसेतान्न संशयः प्रेतसंस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्री गजसमारूढा वैष्णवी गरुणासना माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंससमारूढा शरभाभरणभूषिता नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नोपशोभिता दृश्यन्ते रथमारूढा देव्यः क्रोधशमाकुलाः शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं चामुशलायुधं केटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च सार्गमायुधमुत्तमं दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां भयाय च धारयन्त्यायुधानित्थं देवानां च हिताय वै महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनी त्राहि मां देवि दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धनी प्राच्यां रक्षतु मामैन्द्री अग्नेयामग्निदेवता दक्षिणे बतु वाराहि नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षे वायव्यां मृगवाहिनी उदीच्यां रक्षे कौबेरी ऐशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षे हस्ताद्वैष्णवी तथा एवं दश दिशो रक्षे चामुण्डा सबवाहना जया मे चाग्रतास्तातु विजयास्तातु पृष्ठतः अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखा मे दोत्तिनी रक्षे उमा मूर्ध्नि व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रुवौ रक्षेद् यशस्वनी त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके शङ्खनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासनी कपोलौ कालिका रक्षे कर्णमूले तु शाङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे चामृतकला जीवायां च सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारी कण्ठमध्ये तु चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिम्बुकं रक्षे वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा बहि कण्ठे नलिकां नलकूबरी खड्गधारिण्युभौ स्कन्धो बाहो मे वज्रधारिणी हस्तयोर्दण्डनी रक्षेत् अम्बिका चाङ्गुलिस्तथा नखाञ्चूलेश्वरी रक्षेत् कुच्छौ रक्षे नलेश्वरी स्तनौ रक्षेन्महालक्ष्मी मनाशोकविनाशिनी हृदयं ललिता देवी उदरं शूलधारिणी नाभौ च कामनी रक्षे गुह्यं गुह्येश्वरी तथा कट्यां भगवती रक्षे जानुनी विन्ध्यवासिनी जङ्घे महाबला रक्षे सर्वकामप्रदायिनी उल्पयोर्नारसिंही च पादौ च निततेजसी पादाङ्गुलीषु श्रीरक्षे पादाधस्तलवासिनी नखान्दंष्ट्राकराली च केशाञ्चैवोर्ध्वकेशनी रोमकूपेषु कौबेरी त्वचं वागीश्वरी तथा रक्तमज्जावसामासां मेदांसि पार्वती अन्त्राणि कालरात्रिश्च नित्यं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वाला अभेद्या सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षे छायां चत्तेश्वरी तथा अहङ्कारं मनोबुद्धिं रक्षवे धर्मधारिणी प्राणापानौ तथा व्यानमुदानं च समानकं वज्रहस्ता च मे रक्षे प्राणं कल्याणशोभना रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगनी सत्यं रजस्तमश्चैव रक्षेन्नारायणी सदा आयुरक्षतु वाराहि धर्मं रक्षतु वैष्णवी यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रणी मूत्रमिन्द्राणि मे रक्षे पशून् मे रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्षेन्महालक्ष्मी भार्यां रक्षतु भैरवी पन्थानं सुपथा रक्षे मार्गं क्षेमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मी विजया सर्वथा स्थिता रक्षाहीनं तु यतस्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाश
नाशनी पदमेकं न गच्छेत्तु यदि चेच्छुभमात्मनः कवचेनाव्रतो नित्यं यत्र यत्रार्थी गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सार्वकामिकः यं यं कामयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्यः सङ्ग्रामेष्वपराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्यः कवचेनाव्रतः पुमान् इदं तु देव्याः कवचं देवानामपि दुर्लभं यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्ये पराजितः जीवेत् वर्षशतं साग्रम् अपमृत्यु विवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे भूता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं वापि कृत्रिमं चापि यद्विषम् अविचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचराः खेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिकाः सहजाः कुलजा माला शाकनी डाकनी तथा अन्तरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्च महाबलाः ग्रहपूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेतालाः कूष्माण्डाः भैरवादयाः नश्यन्ति दर्शनात् तस्य कवचेरधि संस्थिते मानो नतिर्भवेत्राज्ञः तेजो वृद्धिकरं परं यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपेत् सप्तशतीं चण्डी कृत्वा तु कवचं पुरा यावद्भूमण्डलं धत्ते शैलवनकाननं तावत्तिष्ठति मेदिन्या सन्ततिः पुत्रपौत्रकी देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरैरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते इति देव्याः कवचं सम्पूर्णं श्रीजगदम्बार्पणमस्तु। अस्य श्रीचण्डी कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः चामुण्डा देवता अगन्याशोक्तमातरो बीजं दिग्बन्ध देवतास्तत्त्वं श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठं गत्तेन जपे विनियोगः। ॐ नमः चण्डिकायै। मार्कण्डेय उवाच यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरन्नृणां यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामहः। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकं पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रि च महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतो रणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्ताः शरणं गताः न तेषां जायते किञ्चित् शुभं रणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि यैस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां हि प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान्न संशयः। प्रेतसंस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्री गजसमारूढा वैष्णवी गरुणासना माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मीः पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंससमारूढा शरभाभरणभूषिता नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नोपशोभिताः दृश्यन्ते रथमारूढा देव्यः क्रोधशमाकुलाः शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं चामुशलायुधं केटकं तोमरं चैव
चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च सार्गमायुधमुत्तमम् दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां भयाय च धारयन्त्यायुधानीत्थं देवानां च हिताय वै महाबले महोत्साहे महाभय विनाशनी त्राहि मां देवि दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धनी प्राच्यां रक्षतु मामेन्द्री अग्नेयामग्निदेवता दक्षिणे बतु वाराहि नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षे वायव्यां रगवाहिनी उदीच्यां रक्ष कौबेरी ऐशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षे हस्ताद्वैष्णवी तथा एवं दश दिशो रक्षे चामुण्डा सबवाहना जया मे चाग्रतास्तातु विजयास्तातु पृष्ठतः अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखा मे दुत्तिनी रक्षे उमा मूर्ध्नि व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रुवौ रक्षेद् यशस्वनी त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके शङ्खनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासनी कपोलौ कालिका रक्षे कर्णमूले तु शाङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे चामृतकला जीवायां च सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारी कण्ठमध्ये तु चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिम्बुकं रक्षे वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा वही कण्ठे नलिकां नलकूबरी खड्गधारिण्युभौ स्कन्धो बाहो मे वज्रधारिणी हस्तयोर्दण्डनी रक्षेत् अम्बिका चाङ्गुलिस्तथा नखाञ्चूलेश्वरी रक्षेत् कुच्छौ रक्षे नलेश्वरी स्तनौ रक्षेन्महालक्ष्मी मनाशोकविनाशिनी हृदयं ललिता देवी उदरं शूलधारिणी नाभौ च कामनी रक्षे गुह्यं गुह्येश्वरी तथा कट्यां भगवती रक्षे जानुनी विन्ध्यवासिनी जङ्घे महाबला रक्षे सर्वकामप्रदायिनी उल्पयोर्नारसिंही च पादौ च निततेजसी पादाङ्गुलीषु श्रीरक्षे पादाधस्थलवासिनी नखान्दंष्ट्राकराली च केशाञ्चैवोर्ध्वकेशनी रोमकूपेषु कौबेरी त्वचं वागीश्वरी तथा रक्तमज्जावसामासा यस्थि मेदांसि पार्वती अन्त्राणि कालरात्रिश्च नित्यं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वाला अभेद्या सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षे छायां चत्तेश्वरी तथा अहङ्कारं मनोबुद्धिं रक्ष मे धर्मधारिणी प्राणापानौ तथा व्यानमुदानं च समानकं वज्रहस्ता च मे रक्षे प्राणं कल्याणशोभना रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगनी सत्यं रजस्तमश्चैव रक्षेन्नारायणी सदा आयुरक्षतु वाराहि धर्मं रक्षतु वैष्णवी यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रणी मूत्रमिन्द्राणि मे रक्षे पशून् मे रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्षेन्महालक्ष्मी भार्यां रक्षतु भैरवी पन्थानं सुपथा रक्षे मार्गं क्षेमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मी विजया सर्वथा स्थिता रक्षाहीनं तु यतस्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशनी पदमेकं न गच्छेत्तु यदि चेच्छुभमात्मनः कवचेनाव्रतो नित्यं यत्र यत्रार्थी गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सार्वकामिकः यं यं कामयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्यः सङ्ग्रामेष्वपराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्यः कवचेनाव्रतः पुमान् इदं तु देव्याः कवचं देवानामपि दुर्लभं यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्ये पराजितः जीवेत् वर्षशतं साग्रम् अपमृत्यु विवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे भूता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं वापि कृत्रिमं चापि यद्विषम्
अविचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचराः खेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिकाः सहजाः कुलजा माला शाकनी डाकनी तथा अन्तरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्च महाबलाः ग्रहपूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेतालाः कूष्माण्डाः भैरवादयाः नश्यन्ति दर्शनात्तस्य कवचेरधि संस्थिते मानो नतिर्भवेत्राज्ञ तेजो वृद्धिकरं परं यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपेत् सप्तशतीं चण्डी कृत्वा तु कवचं पुरा यावद्भूमण्डलं धत्ते शैलवनकाननं तावत्तिष्ठति मेदिन्या सन्ततिः पुत्रपौत्रकी देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरैरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते इति देव्याः कवचं सम्पूर्णं श्रीजगदम्बार्पणमस्तु।